Hello, my dear subscribers and my dear students. Today's topic is why HIV virus is known as retrovirus and what the reason behind it that the treatment of HIV could not be discovered. So, firstly, we have to understand the internal structure, yeah, microscopical structure, ultrastructure of HIV virus. So, see, the HIV virus is totally RNA virus. It has two RNA strand inside it, which make a complementary copy of DNA. Complementary copy means it is not an actual DNA because of two RNA strand are twist to each other and make a DNA copy यानी DNA की नकल करते हैं. And then this virus when infects to anybody, then two RNA strand in the presence of reverse transcriptase enzyme, it convert into complementary copy of DNA. That's why this is called retrovirus. So with the help of a simple diagram, we will understand it, the transmission of retrovirus. This virus discovered by Robert Gallo and Louis Montaglier. So now with the help of a simple diagram, we will understand, and we also understand what the reason behind it, that a person when it infects by this virus, these symptoms appear after 4 to 5 years. So this video is going to be very interesting, so understand it. Okay, so I am drawing the diagram. This is HIV virus. In this virus, we are understanding here that it has two code. It has two code. Now this is lipid code and now protein code. Now this is protein code. And in the protein code, we are finding here two RNA strand. Now we are seeing here these are two RNA. And in presence of reverse transcriptase enzyme, this is reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme. So in the presence of reverse transcriptase enzyme, these are the reverse transcriptase enzyme. In the presence of reverse transcriptase enzyme, these two RNA strand convert into the complementary copy of DNA. It is not actual DNA, but two RNA strand. Now see, when it start to infects to anybody, then what happens? These genetic material, these are two RNA. This one RNA and this one RNA. When they twist to each other, they are making a complementary copy. Complementary complementary copy. This they are making a complementary copy of DNA. This is not actual DNA. This is happening with the help of two RNA strand in presence of reverse transcriptase enzyme. Now this is going to be a complementary copy of DNA. That's why this virus is known as
retrovirus. So this virus is known as retrovirus, इसीलिए हम इस वायरस को retrovirus कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ये वायरस जो है, what the reason behind it, the treatment could not be discovered. Actually, according to the virology, if the virus is DNA virus, it has the genetic material DNA. That's why that virus is called deoxyvirus. If the genetic material is RNA, then virus is called RNA virus. Okay, so now try to understand here what is happening in the case of it, that its a genetic material is RNA and these two RNA are going to be a copy of DNA. यानी DNA नहीं है, DNA की नकल बनाते हैं. That's why it's a complementary copy of DNA. So now the complication is there. This is not a DNA virus. This is not a RNA virus. Actually it is RNA virus. But when it infects to anybody, it is going to be converted RNA to DNA. But this is not an actual DNA. It's a copy of DNA. And when it starts to infect to anybody, then it forms the several form. That's why different types or several forms of the vaccines could not be prepared. If we prepare a vaccine, that a vaccine work with that virus which is in a uniform shape. But what the reason behind it, when it infects to anybody, then it start to the several forms inside the body, and by the help of one vaccine, its a several form cannot be controlled, cannot be killed. That's why vaccination program could not be successful with this virus. जनरली हम ये देखते हैं कि एक वैक्सीन एक पर्टिकुलर शेप पर काम करती है. यहाँ पर एक वैक्सीन हजारों वायरस की फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये वायरस बॉडी के अंदर जाकर सेवरल फॉर्म बनाता है. तो दैट्स व्हाई वैक्सीनेशन इज फेल्ड. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, सिम्टम्स कब आते हैं? सो सिम्टम्स, HIV के सिम्टम्स जो आएंगे उसे आने में 5 साल का समय लगेगा, 4 से 5 साल. तो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आवर आर्मी occurs inside the body in the form of WBC, and WBC are of two types, B cells and T cells. B cells usually forms inside the bone marrow in the long bones, and T cells forms in the thymus gland. So what the reason behind it? This virus usually destroy the thymus gland cells. As the thymus gland cells, it doesn't form the T cells production. As the T cell production become nil, then all the combined infections start to reporting inside the body. Like as a bacterial infection, viral, it's a virus infection. तो बैक्टीरियल भी होंगे, वायरल भी होंगे, फंगल भी होंगे, प्रोटोजोनल भी होंगे. सारे इन्फेक्शंस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे. और हैवी वेट लॉस इन अ शॉर्ट पीरियड, बहुत जल्दी वजन गिरना शुरू होगा. और इसके साथ साथ इम्यूनिटी पूरी तरीके से फेल हो जाएगी. क्यों? वाई द इम्यूनिटी इज फेल्ड? The reason behind it, this virus takes time to destroy the thymus gland inside your body. So जब तक बॉडी में टी सेल हैं तब तक वायरस हावी नहीं हो पाता. तो यही कारण है कि जिस दिन कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है तो उसे कोई भी सिम्टम्स नहीं होंगे, और ये वायरस उसकी बॉडी के अंदर जाके एक एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचकर उसकी थाइमस ग्लैंड को 3 से 4 साल में, यानी
वायरस रिसीव करने के बाद उसकी थाइमस ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, और थाइमस ग्लैंड के डिस्ट्रॉय होते ही थाइमोसिन नाम का हार्मोन बनना बंद हो जाता है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ थाइमोसिन हार्मोन T cells formation stops. The reason behind it, an HIV person doesn't have the T cells in its blood sample, and this can be reported by ELISA test. ELISA, that is known as enzyme linked immunosorbent assay. If the ELISA test has the positive HIV, then life cannot be saved. तो इसलिए अगर व्यक्ति एक बार HIV पॉजिटिव होता है तो फिर उसकी लाइफ को नहीं बचाया जा सकता। हाँ, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स जैसे ज़ाइडोव्यूडिन दे के हम उसकी लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी लाइफ को बचा नहीं सकते। तो अभी हमने ये समझा कि HIV के सिम्टम्स इन्फेक्शन रिसीव होने के 5 साल बाद इसलिए आते हैं कि जब तक हमारे शरीर में T सेल फुल रहती हैं वो HIV से लड़ती रहती हैं, लेकिन 3 से 4 साल में वो HIV वायरस हमारी बॉडी की एक एक सेल में पहुंच के थाइमस ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन नहीं रिलीज होता और T सेल बननी बंद हो जाती हैं, और जब T सेल बननी बंद हो जाती हैं तो पूरी बॉडी पे HIV का कब्जा हो जाता है, और तब उसे 4-5 साल बाद सिम्टम्स आते हैं HIV के सिम्टम्स, जैसे हैवी वेट लॉस इन शॉर्ट पीरियड, फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बॉडी सूख जाती है, हैवी वेट लॉस, पानी पिएगा भी तो भी डायरिया हो जाएगा, कंटिन्यूअस फीवर, स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड्स। तो अभी हमने समझा कि HIV एक लाइलाज बीमारी है, और HIV का इन्फेक्शन रिसीव करने के 4-5 साल बाद सिम्टम्स अपीयर आते हैं, एकदम नहीं आते। आज मुझे बताने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आज हर एक कोई जानता है कि HIV कैसे फैलता है। आज भी HIV उन्हीं लोगों को होता है जो 90% कैरेक्टर के लूज़ होते हैं, या उनके मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन लोगों के साथ होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो HIV पॉजिटिव होते हैं। सिरिंज से भी पॉजिटिव हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी मैं नहीं मानता। उसका कारण है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है आजकल हर आदमी ब्लड बैंक से लेता है, और ब्लड बैंक से ब्लड हम जब लेते हैं तो ब्लड बैंक में जो HIV इन्फेक्टेड ब्लड होता है वो वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसका मतलब आज भी जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उसका मेन कारण है कि दे हैव द मल्टीपल अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन। तो हमने अभी HIV के बारे में जाना, HIV से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दी। इस बात का ध्यान रखें, लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस एंड वन मिस्टेक विल टेक ऑफ योर लाइफ। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते समय गवर्नमेंट ऑथराइज ब्लड बैंक से लें, डिस्पोवेन यानी जो स्टरलाइज सीरिंजेस आ रही हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें इंजेक्शन लगवाते समय, और अपने कैरेक्टर के मॉरल कैरेक्टर के अच्छे बने, और किसी भी अननोन आदमी के साथ ज़्यादा क्लोज ना आए। इन्हीं सब से हम बच सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे।